नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं दीपाली राणा। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। बीता हफ्ता कमजोरी के नाम रहा, स्पेशली आप देखें थर्सडे एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी के अगले दिन यानी इस सीरीज के पहले दिन बाजार में थोड़ी सी कमजोरी। लेकिन इस हफ्ते नतीजे, जेनेट येलन का बयान, जिसने एक बार फिर से अगर आप देखें बाजार को इस बात में मशरूफ कर देगी कि ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और साथ ही साथ आई थिंक कुछ और कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन काफी बढ़ गया है। एफआईएस की अप्रोच क्या रही, इससे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बार एसजीएक्स निफ्टी के स्तरों से। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो लगभग इस वक्त 30 अंक नीचे 859 थी क्लस्टर में। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी एक हफ्ते नहीं था। मैंने आके आंकड़ों को जब देखना शुरू करा, पहली चीज़ मैंने क्या देखी, पहली चीज़ मैंने ये देखी कि शुक्रवार को रुपये की इक्वेशन थोड़ी सी खराब हुई, रुपये ने कमजोरी के संकेत दिए। दूसरी चीज़, अगर आप एफआई स्टैटिस्टिक्स को देखें वो उतने खराब नहीं थे, लेकिन ऑप्शंस का बाजार नई सीरीज की शुरुआत जिस नोट पे हुई है, जिस आईवी के स्ट्रक्चर से, जिस ऑप्शंस के स्टैटिस्टिक्स से हुई है, वो थोड़ी कमजोर नोट पे हुई है, और इसीलिए मैं एक कॉशियस अप्रोच लेके चल रहा हूँ। आइए देखते हैं हम क्या अप्रोच लेके चलेंगे इस वक्त। देखिए, इंडेक्स पे बुलिश मत होइएगा, बहुत बुलिश मत होइएगा। पिछले 2 दिन के आंकड़ों में काफ़ी कमजोरी के संकेत हैं, थोड़ी सी बेरिशनेस आई है। 8620, 8630 जब तक पार ना हो तब तक बहुत तेज होने का मन मत बनाइएगा। उससे पहले अगर आप देखें बहुत लॉन्ग सौदे मत डालिएगा। कॉल राइटर्स हावी हुआ है, पुट्स में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, और याद रखिए सितंबर सीरीज के लिए 8490, 8590 एज पर द 85500 एज पर द ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स सबसे क्रिटिकल जोन रहेगा। और याद रखिए, बीते 2 सेशन में निफ्टी बैंक ने कमजोरी के संकेत दिए हैं, और आपका सबसे मजबूत इंडेक्स जो था बाजार का वो थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। 19,100 के नीचे दीपाली, ये बाजार की सबसे कमजोर कड़ी होगी जी। लेकिन आज के लिए जो क्यूज हैं, सबसे पहले उन्हीं पर फोकस करना बहुत जरूरी है, और सबसे पहले चलते हैं रजत के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कि स्पेशली जो फेड की ओर से स्टेटमेंट्स आए उसके बाद बिहेवियर यूएस मार्केट्स का रहा कैसा, और आज एशियन मार्केट्स खुले कैसे हैं, बताइए रजत। जो बिल्कुल एशियन मार्केट की शुरुआत जो थोड़ी कमजोर हुई है, निक्के को छोड़कर बाकी जो रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले है वो थोड़ा नेगेटिव जरूर हो रहा है। जो आप बात कर रहे हैं जेनेट येलन का बयान, जैक्सन होल में जो उनकी स्टेटमेंट्स थी उस पर बाजार कड़ी नजर रखे हुए था। देखिए, कुछ ऐसा खास एनकरेजिंग, कुछ अलग जैक्सन होल बैठक में नहीं निकल के आया जो हमने पहले ना सुना हो जेनेट येलन की तरफ से। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट में सुधार मजबूती के संकेत है, महंगाई 2% के लक्ष्य के करीब है, जल्द पहुंचती हुई नजर आएगी 2% के लक्ष्य पे। इसके अलावा घरेलू खर्च में बढ़ोतरी से इकॉनमी को मजबूती मिली है। लेकिन एक स्टेटमेंट की परिस्थितियां ब्याज दरें बढ़ाने के अनुकूल हैं, ये जो स्टेटमेंट थी ये कहीं ना कहीं बहुत कॉशियस अप्रोच की तरफ अब बायस कर देंगी पोर्टफोलियो मैनेजर्स को, क्योंकि उम्मीद यही थी कि इस साल में एक बढ़ोतरी तो लगभग तय है, पर वो कब होगी इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं आया है। अब बाजार जो कीनली वॉच कर रहा है वो ये कि अक्टूबर-नवंबर में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, हो सकता है कि तब तक ब्याज दरें फेड ना बढ़ाए, कॉशियस अप्रोच रखे, लेकिन उसके बाद अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो किस क्वांटम से बढ़ेंगी, ये कहीं ना कहीं अब मेजर जो ट्रिगर पॉइंट्स होगा वो वर्ल्ड मार्केट्स के लिए होगा। दूसरा, अगर हमारे पास अक्टूबर-दिसंबर तक का समय है तो तब तक 4 बार जॉब्स रिपोर्ट आ चुकी होगी। अगर बेहतर जॉब रिपोर्ट्स आती हैं तो ब्याज दरें बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और हाइक होती हुई नजर आएगी। फिलहाल जो स्टेटमेंट्स आई है जैक्सन होल बैठक से, उसमें यही है कि ब्याज दरें लगभग बढ़ना तय है, पर किस क्वांटम से और कब बढ़ेंगी इस पे अनसर्टेनिटी। हालांकि जब ये खबर आई तो उसके बाद निचले स्तरों से एक स्मार्ट पुल बैक जो है वो अमेरिकन मार्केट्स पे जरूर विजिबल था, लेकिन आज एशियन मार्केट शुरुआत जो हुई है वो नेगेटिव टोन पे हुई है। ओके, अगर आप देखें तो, और याद रखिए वॉल स्ट्रीट का जो बिहेवियर था ना शुक्रवार को दिवाली, वो बहुत अच्छा नहीं था, और मैं कह सकता हूं कि बहुत दिनों बाद वॉल स्ट्रीट ने कमजोरी के संकेत दिए। डाउ जोन्स बिल्कुल जाके 50 डेमा को टच करके वहां से जो ऊपर आया वो एक टेक्निकल पुल बैक था। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान है बातचीत करने के लिए, और आई थिंक इनकी सोच, इनकी समझ और इनके वक्तव्य, इनके स्टेटमेंट्स को बाजार, चाहे वो कोई बाजार हो, चाहे इंडियन मार्केट्स हो, वॉल स्ट्रीट हो या फिर रेस्ट ऑफ एशिया हो, कोई भी बाजार बहुत बारीकी से सुनता है। हमारे साथ मिस्टर जिम रोजर्स हैं बात करने के लिए इस वक्त। मिस्टर रोजर्स, थैंक्स वेरी मच जॉइनिंग अस, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑलवेज। सर, द एंटायर वर्ल्ड इज नाउ फोकसिंग ऑन द फेड एंड देयर स्टेटमेंट. What exactly is the possibility? What's your take on the possibility of rate hike in US, sir? Hello, I would. Mr. Rojas, are you getting my voice? Hello? Sir, yeah, are you getting my voice, sir? Are you speaking? Is this with Jim Rogers? Are you speaking to me, Jim Rogers? Yes, sir. I'm speaking from India. I mean, we are talking from Zee Business. Okay. Yeah. I'm sorry. They said they were putting me through to the studio. I didn't know I was through. Yes. What do I see? I see. Well, the Federal Reserve in the United States will be raising interest rates after the election.
that will have an effect on world markets, but it will be a temporary effect. It's only after the third time that they raise interest rates that we really should start to worry. But then we should be very, very, very worried, not just in America, but everywhere, including India. Okay. Mr. August, since there is no clarity on the exact timeline of the rate hike, if we go through by the Yellen statement, but are you saying there is strong probability of rate hike in December? Yes, it will not necessarily in December, but it will be after the election. You know, their meeting is scheduled for December, but they can meet and they can raise or lower interest rates whenever they want to. But I would suspect it will be at the regular meeting in December because the election will then be up behind it. But Mr. Rogers, exactly what's your approach towards emerging markets? I mean, no, you know, in India, we are doing approximately, I mean, we were up about 15 to 16% after Brexit. And because of the global liquidity chasing the Indian markets, do you think that the process of rate hike in US will put high degree of pressure in Indian markets and emerging markets as well? It will, well, not all emerging markets are the same. I mean, there are dozens, of course, of emerging markets. But, yes, most will be affected by the rise in interest rates in the U.S. But as I said, it will only be a temporary worry. The history shows that it's really the third or fourth central bank increase in interest rates that one really has to worry. The first one hurts, the second one hurts, but markets usually recover. So I would suspect that emerging markets, including India, will be affected negatively when they raise interest rates in December. But there will be a recovery. But after that, you should be very worried about 2017 and 2018. Okay, but how much downside you are expecting in Indian markets if you talk about Indian isolation, sir? Well, the Indian market is more or less the same as other markets these days because international investors look upon you as a reasonably developed market. I don't think that most international investors differentiate that much. Yes, there's some good things happening in India. Mr. Modi finally has done a brilliant thing with his GST reform. We hope. I mean, they haven't gone through yet, but we hope that they actually happen. He's not good what he did with the central bank, but at least it's not a huge negative. So maybe Mr. Modi is finally living up to his promise. But Mr. Rogers, as you said, the global markets are heading towards a strong profit booking or strong sell-off, and the reflection can be same in Indian markets, especially in 2017 and 2018. So does that mean that we can see some safe buying coming in gold or in silver, like in commodities? Well, what we'll have, oil is in the process of making its bottom. It's a complicated bottom. But yes, oil is making a bottom. I wouldn't necessarily buy oil right now, but it will be, we look back a year or two or three from now, we will see that this was a bottom pattern in oil that has been developing. Gold, I'm not so sure. I expect gold to be down more in the next year or two, partly because the U.S. dollar will be strong. But I own gold. I'm not buying it, but I'm certainly not selling it. But sir, in any circumstances, the rate hike possibility, do you think this possibility is lying in the month of September as well, in any case, sir? Well, as I said, I would expect nothing to happen in September because of the election, and maybe I'll be wrong, but central banks are pretty simple people. But I want to repeat, after you start seeing interest rates going higher, all markets, including India, including nearly all emerging markets, will be having problems. Most markets are down this year, as you probably know. The American averages are doing okay, but most markets around the world are doing badly, especially if you look at the breadth, the advanced decline. Even the U.S. market is not doing well with the breadth. Okay. So, shall I ask you one thing? Who is your preferred? Ask me anything. Yeah. Who is your preferred presidential candidate in U.S. and why exactly?
I will not vote for either of the two if Mr. Trump is elected, and if he does what he says he's going to do, it will mean bankruptcy and war. Trade wars have always led to bankruptcy and often to war. Mrs. Clinton is just as bad, if not worse. It will just take longer. She has no clue what she's doing. She will also ruin the American and world economy. So I will not vote for either of them. I will vote a protest vote. I don't want to waste my time, my vote on the lesser of two evils. The lesser of two evils is still an evil. But Mr. Rogers, if Republican nominee for president wins and implements his currency-slated policies, what impact do you see on financial markets? So which currency? The dollar? Exactly, yeah. My question is, if Republican nominee wins for president and implements it currently, like the policies he's stating right now, if he implements it post-win, if that happens, what impact do you see on financial markets? Well, Mr. Trump has said he's going to have trade wars with China, with Mexico, and with several other people. He has said it many times, and he has said it adamantly, and he said it's going to be tough trade wars with very high tariffs. If he means that, that has always, throughout history, led to economic problems, to bankruptcy, depression, and often to war. One of the problems of history is most people do not learn the lessons of history, including Mr. Trump. He has no clue. And even if he knows history, he doesn't know what it means. So trade wars have always, throughout history, there's never been a case when it hasn't caused problems. But Mr. Trump is adamant that he's going to do it. If he's elected, I'm sure that they will start very quickly, which is one reason I'm worried about the markets the next couple of years. Well, thanks, Mr. Rogers, for talking to us. Thank you so much for being on the show. तो यहाँ पर जो व्यू है मिस्टर रॉगर्स का वो बहुत ही बेयरिश है, फिर चाहे वो ग्लोबल इक्विटीज हो या फिर इंडियन इक्विटीज, और उनका मानना है कि नवंबर में जो इलेक्शंस हैं यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, उसके बाद दिसंबर में रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी है। और लास्ट में उन्होंने जो बात की वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए उनसे पूछा कि मैंने कहा सितंबर में पॉसिबिलिटी है किसी, कह रहे मैं कह नहीं सकता। आई मीन देखिए यहाँ पे भी दिवाली स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आएगा, लेकिन सबसे अच्छा उत्तर उनका था कि मैं किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि अगर डोनाल्ड ट्रंप विन करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा केओस, क्राइसिस और वॉर की सिचुएशन